Welcome, my dear students, to this early reading classes brought to you by Prince Convent School. I hope you have gone through our earlier videos and have enjoyed reading through those. आज के वीडियो में we are going to look at words family. Right? Words family. आप सोच रहे होंगे क्या वर्ड्स की भी फैमिली होती है? यस, वर्ड्स ऑल्सो हैव फैमिली. व्हेन आई से वर्ड्स फैमिली, आई मीन कि सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स, सिमिलर स्पेलिंग वर्ड्स. तो बहुत सारी फैमिलीज होती हैं एंड वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट फैमिली विच इज द इक फैमिली. सी ICK and this is pronounced as ick. इसको कैसे बोलते हैं ICK को? ick. Repeat after me. ick, ick, ick. So all the words which have ick in it or ICK in it will get pronounced as ick. चलो एग्जाम्पल्स देखते हैं ick फैमिली के. So the first member of ick family which we are going to look at is tick. You have to read along with me. तो जब मैं बोलूँगा आपको रिपीट करना है. See, tick, ta, ick, tick. Okay, tick. Now, can you hear the clock tick? आवाज आ रही है आपको क्लॉक की टिक करने की? राइट. सो द क्लॉक टिक्स. रीड दिस सेंटेंस. द क्लॉक टिक्स. द क्लॉक टिक्स. देखो, टिक के आगे मैंने एस ऐड कर देते हैं तो इक्स हो जाता है. सो दिस बिकम्स टिक्स. द क्लॉक टिक्स. ओके. Look at the next member of ick family, and that member is sick. So, ick, sick. Repeat after me. Sick. Can you see the little boy? He is sick. The child is sick. The child is sick. The child is sick. बच्चा बीमार है. Sick means बीमार. Okay? Now let's look at the next member. And the next word is kick. Ko, ick, kick, kick. She kicks the football. Can you see the football? Yes, you kick the football by your foot. She kicks the football. She kicks the football. क्या आपको फुटबॉल खेलना पसंद है? It's a very good game, very good sport. आप सबको कोई ना कोई स्पोर्ट्स खेलना चाहिए. It's good for your health. Let's look at the next member of this family. Are you ready? Okay. So read along with me. P, ick, pick, pick, pick. What is boy doing in the picture? The boy picks the flower. Can you see the flowers? The boy picks the flower. The boy picks the flower. Boy यानी लड़का फ्लावर उठा रहा है या फ्लावर्स तोड़ रहा है. Okay? Do you also like flowers? Yes, they are so colorful. Now let's look at the next member of ick family.
Wow. And the next member is lick, 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 lick. What is boy doing? He licks the ice cream. He licks the ice cream. He licks the ice cream. वह आइसक्रीम को चाट रहा है. All the kids love ice cream. I'm sure you also love ice cream, right? कौन सा फ्लेवर पसंद है आपको आइसक्रीम का? चॉकलेट और वनीला? Okay. Now let's look at the next member. And what do you see? You see a stick. A stick. Stick. एक लकड़ी देख रहे हो. लकड़ी is stick. Pick up the stick. Pick up the stick. Pick up the stick. स्टिक को उठाओ, लकड़ी को उठाओ. Right? So we have looked at so many members of ick family. So let's revise. Remember, you have to read along with me. आपको मेरे साथ पढ़ना है. Tick, kick, sick, pick, lick, stick, brick. Do you see the bricks in the picture? Bricks means eat. Let's read this sentence. The wall is made of bricks. The wall is made of bricks. The wall is made of bricks. दीवार ब्रिक से बनती है. Next word is trick. Wick. Can you see the wick in the picture? ये जो बाती देख रहे हो आप मोमबत्ती की, कैंडल की, that is called wick. Okay? So let's read this. Can you see the wick of the candle? Can you see the wick of the candle? Can you see the wick of the candle? क्या आपको मोमबत्ती की बत्ती दिखाई दे रही है? So now you know what is wick? Great. So let's repeat this word once more. Read with me. Tick, kick, sick, pick, lick, stick, brick, trick, and wick. So, did you like this reading session? It is very important that you read a lot. You should go through this video not once but at least twice or thrice so that you get used to these words. इन वर्ड्स की एक इमेज आपके दिमाग में छप जाए. तो नेक्स्ट टाइम आप जैसे ही वो वर्ड देखोगे आप इमिडिएटली ऑटोमेटिकली बता सकोगे कि ये टिक है, कि दिस इज किक और दिस इज सिक. और ये कैसे आता है? बाय कंटिन्यूअस रीडिंग. स्पेलिंग याद करके आप रीडिंग इंप्रूव नहीं कर सकते हो. रीडिंग इंप्रूव करने के लिए आपको कंटिन्यूअसली रीड करना पड़ेगा. जितना ज़्यादा रीड करोगे उतना अच्छे होते जाओगे रीडिंग के अंदर. सो डोंट थिंक कि ये वीडियो आपने एक बार देख लिया तो आपका काम फिनिश हो गया. नहीं, इस वीडियो को बार बार देखो. 2 दिन बाद फिर से देखो, फिर से 2 दिन बाद देखो. यू शुड कीप वॉचिंग दीज वीडियोज till the time you are able to read each and every word and sentences clearly on your
own. Okay? So the first part in learning is to learn how to read. आप तभी अच्छी पढ़ाई कर पाओगे जब आप चीज़ों को रीड करना शुरू कर दोगे, और एक बार रीड करना शुरू करोगे तो उसका मीनिंग समझना नेक्स्ट स्टेप होता है. ओके, सो दिस इज हाउ वी विल प्रोसीड. फर्स्ट वी विल रीड, रीड एंड रीड, and then we will try to understand the meaning. Okay, I hope you enjoyed this class as much as I enjoyed recording it for you. जितना मज़ा मेरे को इसे रिकॉर्ड करने में आया, आई एम श्योर उतना ही मज़ा आपको भी इसको देखने में आया होगा. आया कि नहीं, बोलो. राइट. सो keep watching these videos and have a nice time, and we will meet soon with the next video. So till then, goodbye. Every one of you say goodbye.